Very good morning, dear students. This is Ankit, and today in this short lecture, we will discuss a very important topic. But before discussing that topic, I would like to ask some questions to all of you. Is that have you ever heard the sound of train, the noisy sound of aeroplane, the sound of bike, the sound of car, the melodious sound of guitar, the melodious sound of tabla, or all such? मुझे लगता है आपने लाइफ में सभी ने कहीं ना कहीं ये सब साउंड सुने ही हुए होंगे. तो द पॉइंट इज दैट व्हाट इज साउंड. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट साउंड. नाउ व्हाट इज साउंड. साउंड इज सिंपली ध्वनि या आवाज. सो साउंड तो समझ में आ गया कि क्या होता है, ध्वनि या आवाज. सो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ साउंड इज दैट sound is a form of energy that gives sensation to our ears. That is called as sound. Okay. Now the question might be arise in your all minds is that, sir, how the sound travels from one place to another? How the sound we are able to hear the sound, and how the sound is produced? So we will answer this one by one. The first one is how the sound is produced. तो कुछ लोग बोलेंगे, सर ये मार्कर है, इसको स्ट्राइक किया, आवाज आ गई. So is the simple reason for the production of sound is that the striking of one object to another object? Is it sufficient answer for this question? No. The actual fact behind the production of sound is that whenever any object strikes to another object, then this object starts vibrating with a particular frequency. So the vibration of that object with a particular frequency gives the production of sound or emits the sound. Okay. अगर ऐसे नहीं समझ में आया हो तो एक सिंपल वर्ड, हम लोगों ने छोटे में एक गेम खेला है. क्या एक खेल खेलते थे, दो फिंगर्स के बीच में एक रबर बैंड लगा लेते थे, उस रबर बैंड को खींचते थे. whenever we stretches that and remove that rubber band, it starts vibrating with a particular frequency. और उस फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेट करने पे बहुत मेलोडियस साउंड आता था उसमें, लाइक अ गिटार. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ गिटार. How guitar produces the sound. There are the strings in the guitar. Whenever we starts vibrating these strings, and when these strings vibrate with a particular frequency, this gives the various kind of sounds or melodious sounds. यानी कि हर एक स्ट्रिंग से अलग अलग टाइप का वाइब्रेशन क्रिएट होता है और अलग अलग वाइब्रेशन से हमें अलग अलग प्रकार का साउंड प्रोड्यूस होकर मिलता है. दिस इज हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस्ड. Now we have learned the production of sound, how the sound is produced. Now the question that may also arise in your mind, sir, we have heard the sound is producing this in this is the reason behind the production of sound. How we are able to listen that sound, or how that sound is transferred from one place to another?
Is there any medium required, or is there any wire required, or any particular thing required to transfer that sound from one place to another? Yes. So how sound is transferred? साउंड कैसे ट्रांसफर होता है? let us draw a diagram of horn. इसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है जो क्या करता है, एक सिंपल सा पर्दा होता है यहाँ पे जो उसको वाइब्रेट कराता है. इसके वाइब्रेशन के कारण यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं they also starts vibrating with that particular frequency with which this diaphragm, this mechanism is vibrating, and these particles, those are vibrating with a particular frequency, gives the strike to another particle, and those another particles also starts vibrating with that particular frequency. यानी सिंपल भाषा में कहा जाए, यहाँ पे जो डायफ्राग्म है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, उसके कारण यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, वो अपनी एनर्जी को दूसरे पार्टिकल्स को देते हैं, वो तीसरे को देते हैं, तीसरा चौथे को देता है, ऐसे ऐसे करके वही साउंड जो वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था वो माइक्रो सेकेंड्स में हमारे पास आ जाता है और हमें सुनाई देता है. दिस इज हाउ द साउंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड दिस इज हाउ वी आर एबल टू हियर द साउंड that is created at a particular distance. Okay. Now we will discuss, there are two kinds of sound. Okay, one is melodious and other is noisy.